तो बेसिकली गाइस भाई मेरे को आज की वीडियो का टाइटल होगा क्रेजीएस्ट नेचर फकिंग वीडियोस। भाई मेरे को ये वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा फिर क्रेजी लगती हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं और मेरे को नेचर का रुतबा नेचर का डेंजरस चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा मज़े आती हैं भाई साहब। मेरे तो वो हो जाते हैं। चलो कुदरती हादसा। हाँ कुदरती हादसा। मीत कहता भाई ये वाली वीडियो लगा, मैं कहा चलो ठीक है इस वीडियो का रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि मेरे को बहुत बढ़िया लगी भाई। क्रेजीएस्ट नेचर वीडियो ऑफ द डेकेड। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं चैट। These are the craziest nature videos from the past 10 years. भगवान ने बचा लिया। भाई साहब गाइज एक बार हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं एक घर में रहता था जिसका नाम था 88 ओनील स्ट्रीट इन चैथम और वहाँ पे एक बार तूफान आया था टॉप का। और वहाँ पे हमारे राइट साइड पे एक घर था, वहाँ का पूरा पेड़ गिर गया था गाड़ी के ऊपर एंड उनको इंश्योरेंस से पैसे मिले थे, टॉप के पैसे। यस, और ये इंश्योरेंस कवर करता है इन चीज़ों को। ये बाहर वाली कंट्रीज़ में, हाँ बाहर वाली कंट्रीज़ में बहुत फ़ायदा होता है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरे को पता है ऑब्वियस ही बात, इस बंदे को भी पैसे मिले होंगे क्योंकि इसने डैश कैम में रिकॉर्ड किया है। ये चीज़ का बहुत फ़ायदा है बाहर वाले देशों में गाइस। यस, वो भी सही बात है। This man went on a tour boat to visit the glaciers in Iceland when a piece of the glacier actually broke off and fell into the water. The wildest thing I've ever tried in my life. ये क्या है? बिजली? Back in 2017, Greenland was hit with a tsunami. Hey, Back in 2020, this cruise ship was on its way to Ireland when it ran into some pretty heavy waves. क्रूज शिप है, क्रूज शिप है। कुछ हो रहा है। वो अंकल कहाँ चला गया था? Back in 2016, these people were hiking in Argentina when they realized that they were in a really bad spot. This guy was loading up his car when he realized that he forgot his wallet. Back in 2018, this massive mudslide in Switzerland was called coming down a mountain. मीट कहता भगवान पे भरोसा रखो, इंश्योरेंस मिलेगी टॉप की। कहाँ से गा रहा है वायरल हॉग। ये क्या है? औरतें। In 2023, this driver in China was almost hit by these falling rocks. पत्थर आएगा मेरे को लगता है। रोक ले। पीछे कर गाड़ी पीछे कर। In 2014, this volcano exploded in Papua New Guinea and it created a huge shockwave. Here we go. Where do we get the food? On November 30th, 2018, a 7.0 earthquake hit Alaska. This volcano in Indonesia erupted and created some of the craziest volcano lightning you will ever see.
Nebraska had some pretty crazy tornadoes earlier this year. ये यूएस बहुत गंदा है। सही बात है, यूएस में बहुत होता है भाई, ये बहुत ज़्यादा। टेनेसी में बहुत होता है भाई, ये टेक्सास के आसपास बहुत होता है। Back in 2019, a super rare event happened that allowed parts of Southern California to receive snow. Because you have too much holiday. And they also got to experience what snow and lightning is like. Got my umbrella, but I know I'm gonna get wet. And look out, like, our street is starting to flood. Imagine seeing this on your way to work. This is what the morning commute looked like for people driving into Los Angeles back in December 2017. सही बात है भाई, कल की अवतार ऐसा भी हो सकता है, हाँ, लिटरली। सब कुछ खत्म करना होगा ना तो। ब्लू शिट। देखिए Back in 2019, this giant landslide happened in China. लैंडस्लाइड? ओ हेल ना, ओ हेल ना। ओ भाई साहब, अगर कोई गाड़ी में बैठा होगा भाई भाई भाई। About 12 months ago, a super intense tornado went past this guy's house in Illinois. This hailstorm in Texas was so intense that the hail started coming inside the home. He left something outside in the rain and had to go get it. About 7 months ago, these people in China were dealing with some pretty crazy wind. Here's another rockslide video that happened in China in 2023. Back in 2015, Los Angeles had a very rare tornado event. About 6 years ago, these people recorded their escape from a wildfire in California. सारे कैलिफोर्निया में क्यों होती है? ये लोग ही लगाते हैं भाई, कोई ना कोई लगा देता है बंदा। देखियो आग कैसे ऊपर आ रही है भाई साहब। ब्रो हेल ना ब्रो, कुदरत का वो तुम वो कर रहे हो यार। बच गया? बच तो उसने जाने। This reporter in France got a little too close to this wave. इधर आ चंपा। चंगा आया डिग्गी, चंगा आया डिग्गी। Back in 2018 in Hawaii, this car was parked in the worst spot possible. ये क्या है? लावा? ये तो भाई साहब रावण की शीट है। गाड़ी से वो गाड़ी देखो कैसे चली। In May 2016, one of the biggest tornadoes in the history of Kansas was spotted. That's good. भाई निकल जाओ, यही निकल जाओ। I know that icebergs are bigger underwater than above water, but this is kind of crazy. ये क्या है? आइस। मेल्ट हो गई। उसके नीचे इतना बड़ा होता है ये। In Pakistan in 2018, these people got a little too close to this avalanche. In 2020, this plane was struck by lightning when flying over Finland. This giant boulder came within inches of crushing this house. Unfortunately, 2 other boulders managed to break free and destroy the other side of the house. In 2019, this cruise ship near Norway encountered some heavy seas. Get that on video. Officially over. यहाँ पे
भाई सर्वाइव करने का बहुत In मजा आया। 2021, these people were rock climbing in Japan when an earthquake happened. This snowboarder in Nevada accidentally triggered a giant avalanche. वहाँ पे क्या कर रहे हैं ऊपर वाले साइड पे। This video from 2015 shows some sailors about to take on a giant wave. पैसे भी बढ़िया होंगे, मजा भी उतना है। लाइव स्ट्रीम करेंगे। Let's go. In 2021, these firefighters were driving through some pretty crazy wildfires in California. ओ भाई रिस्पेक्ट है यार। UC Davis Fire Department wide story। A 6.7 magnitude earthquake interrupted this couple's wedding. स्पेशली हो गया। This dad tried to save his trampoline from being blown away in the wind. Bennett, get out of there! डैडी गडार थे। You will get taken too. Oh. साले Oh my वो gosh. Bennett! This video from Guatemala is probably the only video in the world like this. Dice que es grande, ¿va mucho? Whoa! Miren, cabal, ahorita lo agarraste. Ah, lo agarré, cabal. This is called a crown flash and was spotted in Florida back in 2020. I hope it's getting it on the camera. I can't even see the screen. Holy. Whoa, look at that! The red one, you see that? Sometimes during a snowstorm, you can actually get lightning. Whoa! Coding is changing, and it's changing for the better, and it's because coding agents are getting so good. They're getting smarter, they're getting faster, and so that's why we're excited to announce Cursor 3. In April 2022, this massive tornado hit Kansas. भाई साहब झंडे कैसे टिके हुए हैं? बोलते निकल गए। बोलते ही निकल गए भाई साहब, एक तो निकल गया। This is what it's like to get struck by lightning when you're in the cockpit of a plane. In 2018, one of the biggest tornadoes in the history of Wyoming was recorded. मजा आएगा भाई इधर लाइव स्ट्रीम करने में। भाई साहब बहुत मजा आएगा भाई ये देखने में भी। कितनी बची है पता है? सही बात है, 6 फिगर लोग देख रहे हैं। Mira. No, el que viene de abajo. No. In 2018, 4 waterspouts emerged on the coast of Thailand. अभी भी नदियाँ बढ़ने लगी थी थाईलैंड। देखिए अब कैसे हो। A sinkhole in Illinois randomly opened up earlier this year. वो स्प्रिंग करो तो नहीं रही They were driving down a road in Sydney, Australia when this happened. Wow! Oh my God! This guy was in a pool when an earthquake happened in Taiwan earlier this year. This house in Hawaii was devoured by lava back in 2018. अच्छा इंग्लिश में भी लाओ ओ भाई साहब घर चला गया। These houses in Montana got buried under some tumbleweeds. ये क्या है? अगर इसको थोड़ी सी भी आग लगा दी ना घर चल जाएगा पूरा। समझ लो ये साफ कर देगा। मतलब का 2 बंदे खड़े हुए हैं। Oh my god! Oh my god! पे तो भाई वो तेरी पे अनु। दांत देखो कैसे खोल रहे हैं। Back in 2022, a huge meteor lit up the sky in Idaho. वाओ तो यार बात आया ओह शिट In 2020, a snowstorm in New York mixed with freezing rain, turning their homes into ice.
न्यूयॉर्क। In June 2020, a massive landslide took place in Norway and went into the sea. मम्मी मेरा घर कहाँ गया? पानी में। मम्मी मेरा घर कहाँ गया? अब पूछ गया। अब तो आई नो। पानी डूब गई। All the homes were empty, so luckily nobody was hurt. In 2022, Puerto Rico had flooding that was so severe that it destroyed this bridge. In 2019, a glacier in Iceland fell into the water, creating a massive wave. These tourists on a cruise ship suddenly experienced some extreme static electricity. This is actually a pretty scary warning sign, as it means lightning could strike at any moment. In 2019 in Amsterdam, this tornado was created within seconds. What the? Yeah, tornado. Wyoming had some pretty strong winds that happened earlier this year in April 2024. भाई ऐसे ट्रकों के साथ बहुत होता है बेचारों के साथ ना। This giant tornado was seen moving through Canada. सही बात है ना यार, कुदरत के करिश्मे। भाई साहब थंबनेल का टाइटल होगा कुदरत के करिश्मे। That is, तो हाँ गाइस, ये थी कुछ वीडियो। भाई साहब भाई क्रेजी, भाई कुदरत के करिश्मे, सही बात है। और वो जो थंडरस्टॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं उसको, वो जो घूमने वाला होता है, वो क्या होता है? टोर्नेडो। वो टोर्नेडो होता है, पता नहीं वो क्या होता है यार, जो भी होता है वो घूमने वाला, वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है। एंड मैंने अभी तक आज तक कभी भी नहीं देखा सो फार। बाबा जी को बोलते हैं। तूने देखा है? छोटा सा। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल में? छोटा सा एकदम। भाई साहब थोड़ा, जिसमें मैं बीच में घुस गया था। छोटा सा था तो मेरा घुसते देखते कैसा था। भाई ने देखा हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा सो फार। मैं एक्सपीरियंस करना चाहूंगा ये चीज़ को, अगर हो सके तो हम जरूर करेंगे। तो गाइस ये थी कुछ आज की मेरी वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, और प्लीज़ मेरे को बताना कि ऐसी वीडियोस, ऐसी और रिएक्शन वीडियो में डालूं कि ना डालूं, या फिर कुछ और अलग सा करना भी स्टार्ट करेंगे। तो बस मिलते हैं, जय श्री राम।